हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। मैं हूं आदित्य, आप लोगों का होस्ट, और आज है हम पैलेट्स पायनियर इंडिया प्रेजेंट्स पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2025 सीजन 1 में। It is a historic day and a historic moment where 10 talented portrait artists are going to compete with each other, but only one will become the winner. मजेदार होगा ना? 10 easels, 10 canvas, 10 artists, मगर विनर सिर्फ एक। आज है हमारे साथ इंडिया के बेस्ट आर्टिस्ट एज जूरी प्रमोद कोर्लेकर, जो कि आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव को समझकर चूज करेंगे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2025 सीजन 1 का विनर। आर्टिस्ट ऑफ द ईयर जो आज एक बीज के रूप में हम बो रहे हैं, खास करके हमारे देश में, वो आगे जाके बड़ा वृक्ष में तब्दील हो जाएगी। आप लकी है कि आप पहले बैच में इस कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये स्पर्धा तो है, मगर आप इसे स्पर्धा की तरह मत समझो, क्योंकि जिंदगी में हम जो काम करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उससे हमें जो चीज़ें मिलती है वो उसकी उपनिष्पत्ति होती है, जिसे बाय प्रोडक्शन कहा जाता है। अगर हमारे लिए अवार्ड, पैसा या फेम ये चीज़ प्रायोरिटी बन जाती है, तो हमारा ध्यान है ना आर्ट से उड़ जाता है और उन बाकी चीज़ों पे ज़्यादा सेटल होता जाता है। उससे ये होता है कि आपकी काम की स्ट्रेंथ वीक हो सकती है अगर आपको उससे मिलने वाली चीज़ें कम हो जाए। हर समय एक जैसा नहीं होता, कभी कभी आपको फेम कम मिलेगा, अवार्ड्स नहीं मिलेंगे, तो वो अगर आपका प्राइम मोटिवेशन है तो हो सकता है कि आपका मन आपके काम से उड़ता जाए। तो इस कंपटीशन के इस पहले अवसर पर आपको बहुत ही सुंदर मॉडल साक्षी मिली है। उनको हमने ट्रेडिशनल बट उसी के साथ सिंपल सा लुक दिया है। यहाँ पे एज अ प्रॉप जस्ट रोजेस है उनके हाथ में। तो आपको मैं ज़्यादा अभी टिप्स तो नहीं दूंगा। यहाँ पे शेड एंड लाइट में एक तरफ से अपने सोर्स ऑफ लाइट है, उसके शेड्स हैं, तो आप बेटर जानते हैं कि किस तरीके से ये करना है, क्योंकि उसी वजह से आप यहाँ पे है, बिकॉज आप उतनी तो आपकी तैयारी है। मैंने आपके पूरे सारे काम पहले देखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस स्पर्धा को स्पर्धा ना समझते, उसका जितना आनंद हो सके उठाओ, अपना बेस्ट देने की, परफॉर्मेंस देने की कोशिश करो। आपके लिए यहाँ स्क्रीन पे टाइम सेट किया गया है, काउंटडाउन टाइम होगा, वो 4 घंटे सेट कर रखा है। 2 घंटे का पहला सेशन होगा, फिर लंच ब्रेक होगा और दूसरा 2 घंटे का सेशन उसके बाद में होगा। हम मॉडल को एवरी 45 मिनट्स 5 मिनट का ब्रेक देंगे। आप फ्री है 5 मिनट में, आपका कुछ भी मॉडल के अतिरिक्त बैकग्राउंड का या अदर कोई काम आपको करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यू कैन यूटिलाइज योर 4 आवर्स। मैं फिर से सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू।
10 of the artists have started establishing the proportions and features of their sitter using paint or building a base. But for one, things aren't quite falling into place. Sudhanshu has taken a tougher route. No color, just charcoal. And if that wasn't daring enough, he has also chosen to work on a large canvas, the largest of all the participants in the room. A bold decision. But is it already starting to test him? सुधांशु सब कलरों से खेल रहे हैं आप ऐसे में ड्राइंग करना क्यों डिसाइड किया है, कुछ बताएंगे? एक्चुअली अभी तक मैंने पेंट्स टच नहीं करे हैं एंड आई एम ट्राइंग टू मेक द फंडामेंटल्स रियली स्ट्रांग. Okay. एंड आई हैव बीन ड्राइंग फॉर लाइक इट्स बीन 1.5 year 2 year. Okay. एंड ग्रेफाइट से शुरू किया था. अच्छा, फंडामेंटल्स क्लीन करे देन चारकोल पे स्विच करे क्योंकि ग्रेफाइट से इतना डार्क पुश नहीं होता. राइट. Personally, I'm not touching colors. I'm more into black and white kind of aesthetic more because I did architecture before this. Okay. So maybe वो black and white lines and all it's in here. Right. But I really want to touch colors. Okay. But before I like to complete this drawing fundamentally. Okay. Very nice. Yeah, it's good approach actually. It's the European approach, very extreme classic approach. तो ज़रूर मीडियम से कोई मतलब होता नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करते हैं. Choosing charcoal was bold, but going for a size this big with the limited time they have might just be risky. This is comparative. तो उसमें you have to enlarge the image. So that is very challenging and because I'm making like a little larger than life. Right. So that is more likeness is a challenge. I really like larger than life portraits because it has some kind of X factor in it. When you see a portrait which is like larger than life, so that is why I've chosen the size. Sudhanshu, an artist based in Hyderabad, originally studied architecture but decided to pursue painting just a year ago. Well, in the previous round, Sudhanshu worked entirely in charcoal, using strong contrasts and minimal midtones to shape the form. I'm glad that I'm able to stand with all these artists who have like amazing skill set and able to draw live. I was dying to draw live for a while and that my wish came true. Tell me, Changte, what is your experience till now? Oh, yeah, I mean, I spent some time on the drawing because I don't want to like take the time to fix those drawing issues later on. But right now, I feel like my colors are getting dirty. So I'm just gonna like paint over it, like take applications so I can get the impression that I want. Chante from Mizoram is not just a portrait artist, he's also a boxer. In the previous round, he painted a self-portrait with a paintbrush in one hand and boxing gloves in the other, portraying the hardships he has faced along his journey. While most participants today are painting full-body portraits, Chante has chosen to focus solely on the face. So why are you choosing to paint face only today? I mean, pretty much it's the size of the canvas. I didn't prepare for like a bigger canvas because I'm pretty slow, so. Okay, so because of time limit, you are decided to paint in a smaller canvas and go with only face. Okay. Here's another artist who chose to submit her own self-portrait in the last round. Akshaya, a professional artist from Tamil Nadu with a passion for portraits. She explores various mediums, but it's the human face that continues to inspire her most. I'm trying to cover things up as fast, like quickly as I can, so I can go and like refine things more in the next couple sessions. Okay. Yeah, I'm trying to capture everything before it moves too much, so that I can go back and refine. Okay. What is the easiest thing for today's task, or what is the toughest thing for today's task? I think capturing the drapery nicely, because it obviously changes a lot, and to capture a little bit more softly how it looks and how it flows is kind of my goal. Okay. Yeah, and also overall just integrating the figure into the background. Okay. Yeah. Her previous submission stood out for its emotional depth. इसका जो ओवरऑल लुक है मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, स्पेशली उनके जो कलर स्कीम उन्होंने जो यूज़ की है, ये उनकी स्ट्रेंथ लग रही है. Although the jury appreciated her use of color and the overall finish,
they felt the anatomical and technical aspects could use a bit more attention. Today, we have an art teacher among the participants, Rishi Kanta. His previous work showed a strong understanding of facial structure and subtle tonal work. But with the clock ticking and pressure rising, will he be able to hold that same control today? So Rishi Kanta, yes Rishi. How is your experience still? It's good, sir. It's really good. Yeah. Yeah, you trying? Yeah. Okay. So let me know about your approach in the beginning, Yeah. in the current situation, and for what is your plan for the next hour? So when I was starting it, my main thing was to just block out the big shapes. Right. I really like the approach how Richard Smith does it. Okay. So the Okay. Ella Prima. Alla Prima, Okay. yeah. Okay. So I'm using that approach right now. Uh-huh. So my next few things is like just to focus on the face and the hands, and then leave the background as much as abstract as I can. Okay. Just focusing on the other information, Okay. the portrait and the hands. Okay. Yeah. Do you feel the time is sufficient for your task? I think so, yeah, because the thing was like I was trying to enjoy it actually. Okay. I wasn't focusing too much on the time. Okay. I took a big step when I was trying to paint the hands, but Okay. I think like it's going well, so. Okay. I hope so. Is there any pressure of competition? Not really. I mean, there is there, but I kind of like get into the zone, so I'm kind of enjoying it more than the pressure. Good. Yeah, that's important. Yeah. Keep enjoying your work. Out of all 10 participants selected from across the country, one submission stood out during the jury discussions. Daman Gambhir from Punjab, who painted a self-portrait as a college hostelier. The jury appreciated how he held back from overworking any part of the piece, while still preserving the emotive value of the character in the artwork. तो दमन क्या आप गंभीर है? नहीं सर, बस नाम ही गंभीर है अभी। कुछ आपका सिर्फ नाम गंभीर है। जी सर। ओके, सो आज कंपटीशन की वजह से गंभीर तो नहीं हुए हैं एक्चुअल में? होपफुली नहीं सर, मतलब ट्राई तो ये रहता है कि अपने काम को काम की तरह देखो, जैसे घर पे काम करते हैं ऐसे यहीं पे काम करना है। ओके, मतलब गंभीरता रहनी चाहिए, मगर वो अच्छा काम करने की रहनी चाहिए ना कि कंपटीशन की गंभीरता। बहुत अच्छा। तो कैसा रहा अब तक का सफ़र? अभी आप सुबह से काम कर रहे हैं। अच्छा है सर, काफ़ी मतलब सेटअप भी बहुत अच्छा है, मेटल मॉडल भी बहुत अच्छे हैं और वो अच्छा पोस्ट कर रहे हैं काफ़ी, तो उससे भी इंकरेजमेंट मिलता है कि और इंस्पायर्ड फील होता है काम करने के लिए। बट अभी प्रोसेस वाइज तो आई एम ट्राइंग कि मैंने एक बार कवर अप कर दिया और अभी मेरा अटेम्प्ट है कि मैं इसको और रिफाइन करूँ। अच्छा। और क्योंकि कवर अप होने के बाद मुझे अभी ज़्यादा फोकस, अब मैंने ड्राइंग पे पहले फोकस कर दिया ताकि मुझे अभी मैं ब्रश वर्क पे और बाकी एस्पेक्ट जो क्रिएटिव एस्पेक्ट होता है उस पर फोकस कर पाऊँ। ओके, तो आपने पहले से ही डिसाइड किया था कि आपको पूरा हैंड्स तक करना है या आपने ये डिसीजन बाद में लिया? नहीं सर, एक्चुअली पहले ही डिसाइड किया था बिकॉज आई फील लाइक कि एक पोर्ट्रेचर में हैंड का काफ़ी रोल होता है इन टर्म्स ऑफ जेस्चर, इन टर्म्स ऑफ द एसेंस ऑफ अ पोर्ट्रेट। ओके, आई थॉट लाइक आई विल इंक्लूड हैंड्स बिकॉज इट कन्वेज मोर ऑफ अ पर्सन। आई मीन ऐसा नहीं है कि वो उसके बिना नहीं हो सकता, बट आई थिंक उसके साथ और अच्छा एक जेस्चर आ सकता है। राइट। आई वांटेड टू इंक्लूड। ये आप कोई आपको प्रॉम्प्टिंग कर रहा है या आप गाने सुन रहे सर हैं? गाने सुन, आई होप। अच्छा, कौन से गाने सुन रहे हैं आप? सर बहुत मिक्स्ड है, कभी कोई इंडियन क्लासिकल भी है, कोई वेस्टर्न क्लासिकल भी है। अच्छा जी सर। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। Each artist is deep into their process now, and with the clock ticking, the room is starting to feel the weight of what's at stake. The audience waits in eager anticipation, curious to see which of the 10 hand-picked participants will emerge as Portrait Artist of the Year. So Paji, Representing Punjab, Gurveer submitted a portrait of a wage worker in the fields, painted entirely from a photograph inspired by Richard Schmidt's Alla Prima technique. There's a clear sense of structure, but also the freedom of abstraction, with the broken shapes adding a more expressive touch. how is your experience till now? सर मैं एला प्रीमा में काम कर रहा हूँ। ओके। पहले मैंने ब्लॉकिंग किया था। हाँ। अभी जो सिचुएशन है वो मतलब मैं वैल्यूज बिल्ड कर रहा हूँ अच्छा। धीरे। अच्छा। और थोड़ा डिटेल दे रहा हूँ। अच्छा। और टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ। मेरा वैसे तो कंपोजिशन पे भी ध्यान है सर, वैल्यूज पे भी ज़्यादा, मेरा एप्लीकेशन पे अभी फोकस है सर। अच्छा, कि एप्लीकेशन अच्छा हो। ओके। हाँ जी। ओके, तो आपका भी वे ऑफ डूइंग जो है वो आला प्राइमा की ही है? हाँ, डायरेक्ट पेंटिंग। यस। ओके, या गुड गोइंग।
Keep it up. Today, all the 10 handpicked artists from India are busy painting a live model. Now, the clock says we just have 2 hours to do it. All right, artists, so you have only 2 hours left. Keep on doing the good work and all the best. While most artists today are working with oils or charcoal, one contestant has taken a different route. The only one here choosing pastels, a bold choice that might set her apart. Ipsita Das from Kolkata used pastels in her submission round 2, capturing a portrait of a random stranger. She focused on light and shadow using the softness and luminosity of pastel on toned paper. और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, सो बताइए इस्तिदा, सब लोग ऑयल में कर रहे हैं, एक जन ड्राइंग कर रहा है, तो आपने पेस्टल क्यों सिलेक्ट किया? मुझे पेस्टल तो मैंने मतलब पहले से ही मेरा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वाइब्रेंस जो होता है ऐसे करके, और पेस्टल में हम लाइट को बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका पेस्टल का उसका एक्सप्रेशन बहुत मतलब बहुत एब्स्ट्रैक्ट, बहुत मैं अच्छी तरह से खेल सकती हूँ पेस्टल में अच्छा, ऑयल के मुकाबले। और यही मतलब उसका मुझे पोटेंशियल अनलिमिटेड लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी कर लो तो हो जाएगा, मतलब मेरा लिए नहीं है, ऐसा बहुत सारा ऑप्शंस है। ओके, राइट। तो आपका जो अप्रोच रहा, आप किस तरीके से आप अपना कंस्ट्रक्ट कर रहे हो? मतलब बिग टू स्मॉल। बिग टू स्मॉल। बिग टू स्मॉल। अच्छा, आपने यहाँ पे कुछ स्टडी की है, आप बता सकते हैं क्या करने की कोशिश? मेरा पूरा मतलब इस पेपर में कलर पुट करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ट्राई करके टेस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर वो तो मतलब डर्टी हो जाएगा। हाँ, डर्टी हो जाएगा, कलर मिक्स हो जाएगा। पेस्टल के ऊपर हम एक ऊपर एक लगा सकते हैं, लेकिन उसका इम्प्रिंट रह जाता है, इसीलिए ये मेरा टेस्टिंग रहता है थोड़ा सा पहले, तो फिर मैं गाइडेंस भी मिल जाता है कि लाइट यहाँ से लोग। और ये आपने जब टिंटेड पेपर लिया था तो आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा कलर होना चाहिए? यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर स्टडी किया था, अलग अलग पेपर्स लाए। ये मैंने जो स्टडी किया, लेकिन ये मुझे मतलब जैसे मैं करता हूँ वैसे ही लगा, लेकिन आज का जो मॉडल है वो फीमेल मॉडल है। थोड़ा सा फीमेल में थोड़ा सा वो कलर, वो वाइब्रेंस, वो लाइफ थोड़ा सा होना चाहिए, और कलर भी रेड है, इसीलिए मुझे लगा कि पेपर डल नहीं चूज करते। अच्छा सा, ओके। तो ये सैंड पेपर है? नहीं, सैंड पेपर नहीं, ये मैंने प्रिपेयर किया है। कैनसन का ही पेपर है, हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने वो अपना टेक्सचर लगाया। ओके ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो अच्छा जा रहे हैं, आप करते रहो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सो गौरव सर, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। मग गौरव, काय तुला सगळ्यात, आय थिंक तू सगळ्यात मोठा कॅनव्हास घेतलेला आहेस, तर त्याचं रिझन काय आहे? तुला काय वाटलं की पूर्ण पोर्ट्रेट करावं? सर, माझं रिझन आहे की जेव्हा मी साईज मोठी घेतो तेव्हा मला त्यात जे ब्रश चालवायला जे फ्रीडम मिळतो, फ्रीडम मिळतो, त्यामुळे ये काफ़ी अच्छा है कि आपने कंपटीशन में लिमिटेड टाइम में इतना बड़ा कैनवास लिया है। Gaurav Vathodkar from Maharashtra brought something truly distinct to the submission round. A self-portrait that merges classical Indian art with the academic drawing. Drawing from the Ajanta cave murals and the Jatka tales, his background depicts a bodhisattva, a Buddha in a past life, while the figure itself follows the graceful flow of Tribhanga. तो आप शाश्वत हो, कॉन्फिडेंट हो कि आप कवर अप कर पाओगे सब यस सर, टाइम के बिल्कुल भीतर? बिल्कुल। ओके, दैट्स गुड। अभी का जो स्टेज है आपकी पेंटिंग का, वो क्या है, किस स्टेज पे हो आप? अप्रोच तो ऐसा है मेरा कि थोड़ा लिमिटेड में ही मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव चीज़ बनाना है। अच्छा, लिमिटेड मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कलर्स, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइड इन अ पॉइंट ऑफ मास, यस शेप्स। यस सर, Right. Good, Gaurav. Actually, you have a bigger task, so I don't want to waste your time. Keep it up. Among all the participants today, we also have the youngest of the slot, Surjeet from Haryana. You are looking quite young. Is it okay that I ask your age? My age is 17. Okay, 17 is. I think you are the youngest, maybe. Yes. So, tell me about your painting or your process. Currently, sir, I am in the middle stage. After this, I will move towards a little bit detailings. Okay.
not too much. Okay. I am focusing mainly on bold strokes and not over modeling. ओके ओके राइट, मतलब आप बड़े आकारों से छोटे आकारों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. General to specific. जनरल, राइट राइट राइट, दैट इज गुड अप्रोच, कीप इट अप. All right, participants, it's just 1 hour left and rather few minutes lesser only. 57 minutes to be precise. Keep on doing. सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं. All right, last 5 minutes. After 4 intense hours of live portrait making, brushes have fallen still. But the jury's job was far from over. The artworks were reviewed, not just what was created today, but also the works submitted earlier. Expectations were high, perhaps too high. What unfolded on canvas today didn't fully match the caliber seen during the selection round. It wasn't just about technique. It was about holding your nerve, standing strong, and performing under pressure. And that's where many faltered. So the jury made a bold call. इस कंपटीशन में एंटर करने के लिए आपके प्रीवियस वर्क सबमिट किए थे, जिसके आधार पे काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स में से आप 10 लोगों को सिलेक्ट किया गया था. सो आज ये जजमेंट जो हम दे रहे हैं वो आपका प्रीवियस वर्क जो अब तक आपने बनाए हैं और आज जो परफॉर्मेंस आपने यहाँ पे दिया है वो भी हमने देखा. तो उस बेस पे हम काफ़ी देर तक चर्चा करते रहे. एक बात मुझे फ्रैंकली आपको बतानी पड़ेगी कि आज का जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह का परफॉर्मेंस हम चाहते थे आपसे हो, जो कि आपका पास्ट परफॉर्मेंस आप करते आए हैं, आपको भी पता है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं. लाइव काम करना, ऑडियंस के सामने काम करना, दिस इज़ द टफेस्ट जॉब. यहाँ पे आपके मेंटल स्ट्रेंथ का भी पता चलता है. खड़े होके 4 घंटा काम करना, इसके आपके फिजिकल स्ट्रेंथ का भी पता चलता है. सो हमने ये डिसाइड किया है कि आज पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर डिसाइड नहीं हो रहा है. हम आप में से 2 लोगों को कल एक मॉडल अरेंज करके देंगे. 2 लोग हमने डिसाइड किए हैं, मगर जिस तरह का पेंटिंग अपेक्षित था उस तरह का अचीव नहीं हुआ है, किसी से भी नहीं हुआ है. जो लोग बेटर है वो 2 हम सिलेक्ट कर रहे हैं. कल के परफॉर्मेंस के बेस पे उन दोनों में से एक को डिसाइड किया जाएगा. The jury spent hours in reflection,
conversations turned to debate. Debate to silence. And in that silence, two names kept returning, not for perfection, but for the possibility of it, the kind that deserves one more canvas. The room fell quiet. The first name, अक्षया पार्थसारथी. जोरदार ताली. and then ऋषिकांत सिंह. ये दोनों tomorrow they return to the easel. A new sitter, one final chance. Because this competition was never just about painting. It's about holding up a mirror to who you are when everything is on the line. आप जो To the remaining artists, this is not a defeat. It's a threshold, the kind that invites deeper questions and even deeper conviction. Every master once stood where you stand now. Tomorrow, two artists will begin again. But one will earn the title. The journey continues, and it only gets harder from here. तो आपको शुभकामनाएं हैं और कल के परफॉर्मेंस के लिए जो दो फाइनलिस्ट हमने चूज किए हैं उनको भी शुभकामनाएं हैं. पंच होता है ना, तो या तो आप डार्क पेपर भी ले सकते थे तो ये और इनहैंस हो सकता था. आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है. Just when it felt like the decision was sealed, something held us back. Ipsita stepped forward. She asked for a moment and opened her iPad. What she showed wasn't just art. It was a year's worth of quiet persistence. Portraits layered with study, light, and a strength that doesn't shout. The jury went still, watching, absorbing. इनका काम नहीं दिखा देगा. उन्होंने इतने साल से अपना इंस्टाग्राम पर अपडेट ही नहीं किया. 3 years. इप्सिता दास जो है. And then, slowly, a new consensus began to form. That day may not have been her finest hour, but her body of work had already spoken. रिसेंट वर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. ज़रा आप दिखाइए. तो ये चीज़ हमने वो पोस्ट पुराने थे ये कभी नोटिस ही नहीं किया था. ये जो वर्क है इट्स क्वाइट स्ट्रांग. आप देख सकते हैं ना, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस वर्क इज. ये आप देख सकते हो. ड्राइंग भी आर्टिस्टिक हैंडलिंग भी बहुत बढ़िया है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन फॉर टुमारोज कॉम्पिटिशन. 3 पार्टिसिपेंट कल फाइनली कॉम्पीट करेंगे. उसमें से एक को पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा. दिस इज माय फाइनल स्टेटमेंट. Ipsita Das brought back in as the wild card finalist, and the applause that followed said everything. Day 2 began with a new sitter, a male model this time, with sharp features, clean planes, and a focused light setup. Perfect for study, but not easy. To add a bit of complexity, a cigarette was placed in his hand. A small prop, but one that added character and a new challenge to the artists. Today, the pressure was even more intense. This wasn't just another round. Only 3 finalists remained. All of them brought back by the jury for a second chance. They knew what was at stake. They knew this was their last shot. Every brush stroke carried more weight. And in the room, you could feel it. The tension building quietly with each passing minute.
we were just moments away from discovering who would be crowned the Portrait Artist of the Year, Season 1. The artists worked in near silence, studying, measuring, correcting. Some got the likeness early, others built up slowly, layer by layer. Each artist had a different process, but all were completely in it. As time ticked down, the energy shifted. Akshaya stayed focused, cleaning her canvas, making sure her composition was balanced and clear. Rishikanta kept working till the very end, till fixing tones, still pushing form. Ipsita, calm and composed, had already stepped back. Her piece is complete. And then, the final call. Brushes down. The round was over. And now it was time to decide. The judging this time wasn't easy. Unlike the first round, the top 3 finalists had returned with one clear goal: to prove they truly deserved the title. And this time, they delivered. The jury had a real challenge on their hands. Each artwork had its own strengths, from thoughtful hand gestures to subtle light handling. The detail was sharper, the decisions more deliberate. But perfection was still elusive. In one work, the hand holding the cigarette was beautifully treated, full of character. स्पेशली ये नीचे वाला हाथ जिसमें सिगरेट पकड़ी हुई है, मगर कंपैरेटिवली अगर हम ड्रेप देखें तो यहाँ पे उतना स्ट्रेंथ नहीं आया है. The tones in the face and the color chroma didn't land as strongly. The background, instead of supporting the portrait, pulled attention away. Another finalist showed great understanding of skin tone and color temperature. ऋषिकांता का कलर अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है. उसने जो स्किन कलर्स बनाए हैं वो जो मॉडल उनके सामने बिठाया था उससे काफी रिसेम्बलेंस दिखा रहे हैं. The work was structurally sound, but it lacked emotional connect. It felt too still, like something was missing beneath the surface. Then came the third, a mature handling of space, a subtle color palette, a sitter lost in thought, the emotion just right. कंपोजिशन भी बहुत अच्छा किया है ऐसा लग रहा है. बैकग्राउंड को भी मेन सब्जेक्ट को इन्हांस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया है. और बैकग्राउंड में ब्रीदिंग स्पेस भी रखा है, ऐसा नहीं कि सब जेट ब्लैक कर दिया है. The background didn't overpower but enhanced. The portrait breathed. इमोशन अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा रिलेटेड टू द सब्जेक्ट लग रहा है. मतलब सिगरेट पीने वाले बंदे के इमोशंस जो है, और ईज जो है पोज की, वो भी इसमें ज़रा कंपैरेटिवली अच्छी लग रही है. Technically, compositionally and emotionally, this painting felt complete. ये ज़्यादा बेटर है. The jury didn't just judge today's work though. They took into account the previous rounds too. And finally, a decision was made. 2025 का पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है अक्षया पार्थसारथी. A big congratulations to Akshaya Parthasarthi, the very first portrait artist of the year. A journey that began with hundreds of entries, filtered down to 10, and finally to 3 artists who stood the test of pressure,
time, and skill. And among them, only one canvas spoke the loudest. But this isn't just a victory for one. Rishikanta and Ipsita both gave their best and they stood tall till the end. To every artist watching, from every corner of the country, this was only season 1, a nationwide, one of its kind platform, designed to discover and celebrate the finest artistic minds of India. Next time it could be your brush, your name, your moment. Until next time, see you in season 2 of Portrait Artist of the Year, presented by Pellets Pioneer India.